There comes a point when reconciling with the right decision, however difficult it may seem, requires internal and external convincing. Pakistani authorities are at that moment in time. The country has been echoing with misguided trepidation around the tough conditionalities being thrust upon it by the International Monetary Fund. The prevailing belief is that an inflexible IMF has been demanding painful adjustments from Pakistan if it is to move ahead and complete the pending 9th review that has stalled Pakistan's IMF-supported bailout program. The notion of tough conditionalities needs a dispassionate analysis to break the impasse between Pakistan and the IMF. These conditionalities are largely short-term moves required to avoid a full-blown economic meltdown. Any mainstream economist will make similar recommendations whenever there is a balance of payment crisis and fiscal and quasi-fiscal bleeding of the economy. Perhaps the most common IMF condition is believed to be the revision of energy prices. This is a misreading of the facts. The IMF does not determine energy prices for Pakistan. Energy pricing is the purview of the country's independent regulators. For example, the Oil and Gas Regulatory Authority, OGRA, not an external actor, determines gas prices after reviewing petitions from two state-owned enterprises, Sway Northern Gas Pipelines Limited and Sway Southern Gas Pipelines Limited. Since September 2020, successive governments have taken a conscious decision to delay the pass-through of price determinations made by OGRA. These were populist but untenable calls. The freezing of these prices has been a key contributor to the accumulation of nearly 1,600 billion rupees in the state's quasi-fiscal liabilities. The wise approach is to do what's needed to get on with the program. The country's recent engagement with the IMF has simply brought the need to pass on the prices determined by OGRA to the forefront. Quite frankly, Pakistan should have made the decision much earlier and on its own. The same principle applies to the power sector's quarterly and annual tariff adjustments and the fortnightly adjustment of petroleum product prices, with NEPRA and OGRA determining the prices in each case. Fiscal consolidation measures are most critical at this juncture. Tax authorities are expected to devise additional measures, even during a fiscal year, to ensure the achievement of annual budgetary targets. But, again, this is something we should be doing on our own, without needing IMF to nudge us in this regard. Let's turn to the other presumption, that short-term adjustments advocated by IMF are tough decisions. This requires a serious analytical assessment. Pricing changes in the energy sector, tinkering with levies on imports and abnormal profits, imposition of sales tax, and a market-based exchange rate are medications for treating a bleeding economy. These measures can be considered politically toxic, but they are certainly not tough to implement, even under a weak governance structure. Global experience highlights that macroeconomic stability achieved during the life of an IMF program is necessary, but not sufficient to ensure long-run growth. That requires addressing more fundamental issues, which an IMF-supported facility may not necessarily address. The wise approach is to make the needed calls to get on with the bailout program, improve dollar liquidity and restart the economy, then use the short-term stability thus achieved to implement the actual tough structural reforms. The country is yearning for radical social, economic and institutional transformation. Issues like population control, the energy sector's overhaul, agriculture productivity revamping, a competitive and not state-subsidized export regime, balancing of the current account, debt reprofiling, fiscal and expenditure reforms to curtail the fiscal deficit, and pushing through with divestment are the actual tough calls. For Pakistan, the pass-through of long-due adjustments, now necessitated by the IMF, feels like shock therapy. In this framing, the IMF must convince those who matter that it is a force of good on issues which can protect the economy from further macro instability. The two sides must now agree to a credible staggering of adjustments along with adequate adjusters for flood money to forge some kind of a modus vivendi. Delaying short-term stabilization measures can cause more pain than the measures themselves. The longer we wait, the more abrupt they will ultimately have to be. Inaction can leave Pakistan in an uncomfortably exposed position on its dollar financing needs,
weakening its ability to pay for essential imports or honorably service its debts. The writer was part of the team that negotiated the IMF programs of 2016 and 2019 and implemented the 2016 program. Published in Dawn, January 28, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. एक नुक्ता आता है जब सही फैसले के साथ मुसालहत करने के लिए चाहे ये कितना ही मुश्किल क्यों ना लगे, अंदरूनी और बैरूनी कायल करने की जरूरत होती है। पाकिस्तानी हुक्काम इस वक्त मौजूद हैं। बैन अल-अक़वामी मालियाती फंड IMF की जानिब से इस पर सख्त शराइत मुसल्लत किए जाने के बारे में मुल्क गुमराहकुन खौफ से गूंज रहा है। आम ख्याल ये है कि IMF पाकिस्तान से तकलीफ दे एडजस्टमेंट का मुतालबा कर रहा है अगर उसे आगे बढ़ना है और ज़ेर इल्तिवा नवी जायजा को मुकम्मल करना है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के IMF की मदद से बेल आउट प्रोग्राम रुक गया है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तातुल को ख़त्म करने के लिए सख्त शराइत के तसव्वुर का गैर जानिबदाराना तज्ज़िया करने की ज़रूरत है। ये शराइत बड़ी हद तक कलील मुद्दती इक़दामात हैं जो मुकम्मल माशी बहरान से बचने के लिए ज़रूरी हैं। जब भी अदायगियों के तवाज़ुन का बहरान पैदा होता है और मईशत का माली और नीम माली बहाव होता है तो कोई भी मेन स्ट्रीम इकोनॉमिस्ट इसी तरह की सिफारिशात पेश करता है। शायद IMF की सबसे आम शर्त तवानाई की कीमतों पर नज़रसानी है। ये हक़ाइक़ का गलत मुताला है। IMF पाकिस्तान के लिए तवानाई की कीमतों का तयन नहीं करता। तवानाई की कीमत मुल्क के आज़ाद रेगुलेटर्स के दायरा इख्तियार में है। मिसाल के तौर पर ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी उगरा, दो सरकारी इदारों सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड और सुई सदर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड की दरखास्तों का जायजा लेने के बाद गैस की कीमतों का तयन करती है। सितंबर 2020 के बाद से आने वाली हुकूमतों ने ओगरा की जानिब से कीमतों के तयन में ताख़ीर का शऊरी फैसला किया है। ये अवामियत पसंदाना लेकिन नाकाबिल कबूल कॉज थी। इन कीमतों को मुंजमद करने से रियासत के नीम माली वाजिबात में तकरीबन 1600 अरब रुपए जमा हुए हैं। दानिशमंदाना नुक्ता नज़र ये है कि प्रोग्राम के साथ आगे बढ़ने के लिए जो कुछ ज़रूरी है वो किया जाए। IMF के साथ मुल्क की हालिया मसरूफियत ने ओगरा की तरफ से तय करदा कीमतों को सामने लाने की ज़रूरत को सामने लाया है। सच तो यह है कि पाकिस्तान को यह फैसला बहुत पहले और खुद करना चाहिए था। यही उसूल बिजली के शोबे की सेमाही और सालाना टैरिफ एडजस्टमेंट और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की 15 रोज़ा एडजस्टमेंट पर लागू होता है। नेप्रा और ओगरा हर सूरत में कीमतों का तयन करते हैं। इस मौके पर मालियाती इस्तेहकाम के इक़दामात सबसे अहम हैं। तवक्को की जाती है कि टैक्स हुक्काम माली साल के दौरान भी इजाफी इक़दामात करेंगे ताकि सालाना बजट अहदाफ के हुसूल को यकीनी बनाया जा सके। लेकिन एक बार फिर ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें अपने तौर पर करनी चाहिए। IMF को इस सिलसिले में दबाव डालने की ज़रूरत नहीं है। आइए दूसरे मफरूज़े की तरफ आते हैं। IMF की जानिब से पेश करदा कलील मुद्दती एडजस्टमेंट मुश्किल फैसले हैं। इसके लिए संजीदा तज्ज़ियाती तशख़ीस की ज़रूरत है। तवानाई के शोबे में कीमतों में तब्दीली, दरामदात और गैर मामूली मुनाफा पर लेवीज़ के साथ छेड़छाड़, सेल्स टैक्स का नफाज और मार्केट पर मबनी शरह तबादला खून बह रही मईशत के इलाज की दवाएं हैं। इन इक़दामात को सियासी तौर पर जहरीला समझा जा सकता है, लेकिन कमज़ोर इंतज़ामी ढांचे के तहत भी उन पर अमल दरामद यकीनी तौर पर मुश्किल नहीं है। आलमी तजर्बा इस बात पर रोशनी डालता है कि IMF प्रोग्राम की ज़िंदगी के दौरान हासिल करदा मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम ज़रूरी है, लेकिन तवील मुद्दती तरक्की को यकीनी बनाने के लिए काफ़ी नहीं। इसके लिए ज़्यादा बुनियादी मसाइल को हल करने की ज़रूरत है, जिनको IMF की हिमायत याफ्ता सहूलत लाजमी तौर पर हल नहीं कर सकती। दानिशमंदाना तरीका यह है कि बेल आउट प्रोग्राम को जारी रखने, डॉलर की लिक्विडिटी को बेहतर बनाने और मईशत को दोबारा शुरू करने के लिए ज़रूरी मुतालिबात किए जाएं। फिर हकीकी सख्त साख्ती इस्लाहात को नाफिज करने के लिए इस तरह हासिल करदा कलील मुद्दती इस्तेहकाम का इस्तेमाल करें। मुल्क बुनियादी समाजी, माशी और इदारा जाती तब्दीली का ख्वाहां है। आबादी पर काबू पाने, तवानाई के शोबे में इस्लाहात, ज़री पैदावार में बेहतरी
मुसाबकती और रियासती सब्सिडी वाले बरामदी निज़ाम, करंट अकाउंट में तवाज़ुन, कर्ज़ों की रिप्रोफाइलिंग, माली खसारे को कम करने के लिए मालियाती और अखराजात में इस्लाहात और सरमायाकारी जैसे मसाइल असल मुश्किल मुतालिबात हैं। पाकिस्तान के लिए तवील अरसे से तयशुदा एडजस्टमेंट, जो अब IMF की जानिब से ज़रूरी है, शॉक थेरापी की तरह महसूस होती है। इस फ्रेमिंग में IMF को उन लोगों को कायल करना होगा जो अहमियत रखते हैं कि वो ऐसे मामलात पर अच्छाई की क़ुव्वत है जो मईशत को मज़ीद बड़े अदम इस्तेहकाम से बचा सकती है। अब दोनों फरीकों को किसी किस्म का तरीक़ाकार वज़ा करने के लिए सैलाब की रकम के लिए मुनासिब एडजस्टर्स के साथ काबिल एतमाद एडजस्टमेंट पर इत्तेफाक करना होगा। कलील मुद्दती इस्तेहकाम के इक़दामात में ताख़ीर खुद इक़दामात के मुकाबले में ज़्यादा तकलीफ़ का बाइस बन सकती है। हम जितना ज़्यादा इंतज़ार करेंगे, आखिरकार उन्हें इतना ही अचानक होना पड़ेगा। गैर फ़ालियत पाकिस्तान को डॉलर की माली ज़रूरियात के बारे में गैर आरामदेह पोजीशन में छोड़ सकती है, जिससे ज़रूरी दरामदात की अदायगियाँ अपने कर्ज़ों को बाइज़्ज़त तौर पर अदा करने की इसकी सलाहियत कमज़ोर हो सकती है। मज़मून निगार इस टीम का हिस्सा थे जिसने 2016 और 2019 के IMF प्रोग्रामों पर बातचीत की और 2016 के प्रोग्राम को नाफिज किया। अखज़ शुदा बतारीख़ 28 जनवरी 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.